alternator or generator, and it's supplying a load of 300 kilowatt at a power factor of 0.6 lagging. The power factor is raised to unity. Ideally अगर हम बात करें तो कभी भी one power factor नहीं हो सकता, but there is some assumption. Then he asks how many kilowatts can alternator supply for the same kVA loading. अगर लोडिंग आपकी चेंज नहीं हो रही तो आपने पावर फैक्टर इंप्रूव कर दिया, तो अल्टरनेटर जो पहले 300 किलोवाट लोड सप्लाई कर रहा था, तो अब ये अल्टरनेटर कितना सप्लाई करेगा. So you know that the kVA is connected or related to your kilowatt with this formula, and you know that cos phi is equal to real power over apparent power. So from here you got to know that your kVA is 500 kVA. That is the generator is supplying. And kilowatt at 0.6 power factor is 300 kilowatt, and kilowatt at 1 power factor is equal to 500 multiplied by 1. So it will be equal to 500 kilowatt. So how much increase in power? You can say that increased power supplied by the alternator is approximately equal to, so not approximately, exactly equal to 200 kilowatt. This is the importance of the power factor improvement. जैसा कि आपने पहले देखा कि आपका पावर फैक्टर जब अल्टरनेटर का या जनरेटर का यूनिटी हुआ तो आपकी 500 kVA है, वो आपकी 500 किलोवाट सप्लाई कर रही है. इंजन ड्राइविंग द अल्टरनेटर हैज टू बी कैपेबल of developing this power together with the losses in the alternator. लेकिन जब आपका पावर फैक्टर 0.6 था, the real power was only 300 kilowatt. Therefore, the engine is developing only 300 kilowatt, although the alternating is supplying its rated output of 500 kV, and the rest was the losses, or you can say the reactive power. Second question is, there is a single motor connected to 400 volt 50 hertz supply, and it takes approximately equal to 31.7 ampere at a power factor of 0.7 lagging. Then you have to find out what should be the capacitance required in parallel with the motor, and you have to raise the power factor up to 0.9 lagging. तो आपको पता है कि सबसे पहले you have to find out कि आपके पास एक्टिव कंपोनेंट कौन से. अब एक्टिव कंपोनेंट की बात करें तो आपको पता है कि सप्लाई कितनी करंट ले रही है. इट इज टेकिंग 31.7 एम्पियर. इफ इट इज टेकिंग 31.7 एम्पियर करंट हियर है एट 0.7 पावर फैक्टर लैगिंग, तो फ्रॉम हियर यू नो दैट अगर आपके पास कोई भी करंट है, फॉर एग्जांपल दिस इज द लैगिंग करंट, एंड अगर इसका आपने एक्टिव कंपोनेंट देखना है, इट विल बी इक्वल टू IM cos of theta. Now cos of theta, you know that it is equal to 0.7, and you got to know that the active component is 22.19 in magnitude. And you know that the active component is given by I into cos of theta. Now you don't know the actual magnitude, कि magnitude कितनी increase या decrease हुई है due to the power factor, but you know the power factor कितना increase करना है, it is approximately equal to 0.9. So by comparing the both, you can find out that now your current is 24.65 ampere after increasing the power factor. So now your current is increased from 22, that was the lagging, 22.19, sorry, and now this is equal to 24.65. अब ये जो आपने इंक्रीज की है आपने कंपोनेंट, इट मींस कि इसके लिए कुछ कैपेसिटिव करंट आपको चाहिए होगी, जिसकी वजह से आपकी जो करंट है वो एक्सीड करेगी. तो रिएक्टिव कंपोनेंट की अगर हम बात करें, यू नो दैट इट इज इक्वल टू IM साइन ऑफ थीटा, एंड थीटा आपके पास क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू cos इनवर्स 0.7. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, और साइन ऑफ थीटा पुट करेंगे तो आपको पता है IM इज इक्वल टू 31.7 एंड रिएक्टिव कंपोनेंट आपका 22.6 एम्पियर आ जाएगा इन केस ऑफ पावर फैक्टर 0.7. Similarly, you can find out the reactive component in case of 0.9 power factor as well. और अब ये आपको पता है कि आपके पास जो करंट है वो कितनी है, 24.65, and
From the Pythagoras theorem, you can write that sine phi will be equal to under root 1 minus 0.9 whole square. So from here you get the reactive component is 10.75. अब आपकी जो करंट ज्यादा या कम होती है वो रिएक्टिव जो आपका कंपोनेंट है करंट का उसको अपोज करने की वजह से होती है. इट मींस दैट यू हैव टू अपोज हाउ मच करंट 22.6 माइनस 10.71. इसको आपने कैपेसिटेंस की मदद से करंट को कम करना है. कितना कम करना है? 11.85 एम्पियर. इट मींस कि आपकी जो कैपेसिटिव करंट है इट शुड बी इक्वल टू 11.85. नाउ यू नो दैट V is equal to IB, I is equal to V over XC, and XC is equal to 1 over 2 pi FC. So XC is equal to 1 over 2 pi FC, it will be equal to V into 2 pi FC. So putting the values of IC, करंट आपको कैपेसिटिव कितनी चाहिए कि आपकी जो रिएक्टिव कंपोनेंट की जो करंट है वो 22.6 एम्पियर से डिक्रीज होकर 10.75 हो जाए. इट इज इक्वल टू 11.85 एम्पियर. And putting the values, voltage is equal to 400 and into 2 pi FC, frequency is 50, and capacitance is the value you have to calculate, and it will be, so you can get, it will be equal to 94.3 microfarad. अब ये आपको क्वेश्चन के साइन थीटा ये अंडर रूट 1 माइनस 0.9 होल स्क्वायर कैसे आया, तो वी हैव ऑब्टेन्ड बाय दिस फॉर्म. cos theta आपको पता है it is equal to 0.9, so sin theta can be calculated from this value too, as your sin square plus cos square theta is equal to 1. Now the next example is there is a single phase AC generator and it supplies the following loads. First of all, there is lightning load of 20 kilowatt at unity power factor. Then there is some induction motor of 100 kilowatt at power factor 0.707 lagging, and then there is synchronous motor load of 50 kilowatt at power factor 0.9 lagging. So you know that S is equal to P over cos theta. First of all, you have calculated apparent power generator से कितनी required होगी. apparent power factor का आपको पता है, apparent power आपने कैलकुलेट कर ली कि लाइटनिंग लोड के लिए 20 kV है, जो आपके पास इंडक्शन मोटर है उसके लिए 141.4 kV है, और आपका जो तीसरा लोड है सिंक्रोनस मोटर लोड है उसके लिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट है kVA की जनरेटर से वो कितनी है 55.6 है. अब आप टोटल kVA तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल किलोवाट and the power factor at which it works. You know that these are the different loads. For example, this is the KVR2, this is the KVA2, and similarly this is the KVA3, and this is the KVR3, and this is the kilowatt 2. Okay, and this is, you can say, it is equal to KVA. अब सबसे पहले अगर लाइटनिंग लोड की बात करें तो यूनिटी पावर फैक्टर है, इसका मतलब है कि जो आपकी रिएक्टिव पावर है इट विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज यूनिटी पावर फैक्टर मींस द रिएक्टिव पावर इज एब्सेंट, जो आइडियली पॉसिबल नहीं है. इंडक्शन मोटर की बात करें तो 0.707 लैगिंग है. सो फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस फार्मूला Q इज इक्वल टू S sin theta, you got that it will be equal to minus 100 kVAR. Similarly, if you are talking about the synchronous motor load of 50 kilowatt, you got that it will be equal to 24.3 kVAR. Now there is some difference in the kVAR you are seeing here. कि इधर तो आपने देखा कि kVAR नेगेटिव में है, लेकिन इधर kVAR आपकी पॉजिटिव में है. इट मींस कि एक लैगिंग है और दूसरी लीडिंग kVAR है. सो इट मींस कि दोनों आपस में एक दूसरे को अपोज कर रही है. अगर टोटल किलोवाट की बात करें तो 20 किलोवाट 100 प्लस 50 इट विल बी इक्वल टू 170 किलोवाट. नाउ टोटल केवीआर आपके पास कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू माइनस 75.7 केवीआर. So this is the power factor, and you know that you can find out after the KVR आपके पास एक दफा आ गया, so it is the minus KVR, it means that the KVR is in leading form.
So now the total kVA can be found out by the formula. You know that S is equal to P square plus Q square. So you get the apparent power is equal to 186 kVA. अब आपको पता है कि जो आपका पावर फैक्टर है, it is the ratio between the real power and the apparent power, and from here you got the power factor that is equal to 0.914. Now the next example is कि आपके पास कोई 3 phase 5 kilowatt induction motor है, उसका power factor 0.75 lagging है, and you have to connect a bank of the capacitors is connected in delta. जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था, we can connect in delta and we can connect it y as well depending upon the condition कि आप क्या फायदा लेना चाह रहे हैं. Across the supply terminals and power factor raised to 0.9 lagging. Then you have to determine that what is the kVA rating of the capacitors connected in each phase. Original power factor आपके पास 0.75 है, और जो improve आप करना चाह रहे हैं 0.9 है, और अगर efficiency हम assume कर ले 100% है, और जो input power induction motor की कितनी है, it is approximately equal to 5 kilowatt. Now from here cos theta भी पता है, cos theta 2 भी पता है, from here theta की values आ गई, और you know that कितनी आपको kVAR चाहिए capacitor. You have the formula, it is equal to real power into tan theta 1 minus tan theta 2. You got the values of tan theta 1 and theta 2, where theta 1 and theta 2 are in degree, and you got kVAR is equal to 1.99 kVAR. और rating of capacitor per phase कितनी होगी, you will divide by the 3. फिर आप 3 phase की बात कर रहे हैं, तो इधर आप single phase के लिए divided by 3 कर. Similarly, अगर आपके पास कोई 3 phase 50 Hz 400 volt की मोटर है, and it develops some 100 horsepower 74.6 kilowatt, और the power factor आपको given है, that is 0.75 lagging, और efficiency कितनी है 93%. You have to connect a bank of the capacitors connected in delta across the supply terminals, and each of the capacitor units is built of 4 similar 100 volt capacitors. Then you have to determine that what is the capacitance of each capacitor. Now you know that kVAR का वही formula P into tan theta 1 minus theta 2. From here you got the value kVAR आपने 3 से डिवाइड किया, तो पर फेज के लिए आपके पास आ गई पर each of 3 sets. Now the second thing was the each of the capacitor units is built of 4 similar 100 volt capacitors. So it is somewhat like this. For example, ये आपकी 3 phase मोटर है, ये सप्लाई आ रही है, ये आपने डेल्टा कनेक्शन लगा दिया, और ये आप देख रहे हैं कि 4 आपके पास कैपेसिटर्स की मदद से एक सेगमेंट बना हुआ है. So now I is equal to V over XC. Putting the values you got, it will be equal to 125600 C amperes. Now C आपके पास unknown quantity है, so putting the values just like this in this value, you will get it will be equal to 50240 C. और ये आपके पास किसके इक्वल है 14.75 के. From here you can get the value of the capacitance as well. Similarly, there are अगर आपने निकाल दी एनुअल कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं कि आफ्टर द पावर फैक्टर करेक्शन कितनी आपके पास जो टोटल एनुअल कॉस्ट है उसमें क्या डिफरेंस आया, सेविंग कितनी है. फॉर एग्जांपल वी हैव अज्यूम एन एग्जांपल प्रॉब्लम, वो कोई लोड है, कोई इंस्टॉलेशन है दैट इज इक्वल टू 800 किलोवाट, 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर है विच वर्क्स फॉर 3000 आवर्स पर एनम. जो टैरिफ है आपका वो 100 रुपीज़ पर केवीए प्लस 20 पैसा पर किलोवाट आवर है. टैरिफ कहते हैं कि जो यूनिट की पर यूनिट की वैल्यू है. फॉर एग्जांपल जो बिजली का टैरिफ है जो गैपको की तरफ से, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें गुजरांवाला डिवीजन में, तो जो टैरिफ होता है वो डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल कभी कभी सब्सिडाइज भी किया जाता है. फॉर एग्जांपल अगर आप बिल देखें तो आप देखेंगे कि अगर आपका बिल फॉर एग्जांपल 400 यूनिट से ज़्यादा है तो सब यूनिट्स का एक ही बिल लगेगा, जो प्राइस है वो ज़्यादा होगी. इसी तरह अगर आपका बिल 100 यूनिट से कम आता है तो फिर आपका पर यूनिट जो प्राइस है वो कम हो जाती है. इट इज़ फॉर द पुअर पीपल
तो जिनका यूटिलाइजेशन कम है उनको कुछ सब्सिडाइज करने के लिए ये गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज होती हैं कि जितने पर यूनिट आपके कम हैं तो आपकी जो प्राइस भी है वो लो हो जाती है। इसी तरह अगर 400 से 1000 प्लस में चल जाती है तो पहले 400 के लिए डिफरेंट प्राइस होती है और 400 के बाद जितने भी यूनिट्स हैं उनके लिए हायर प्राइस होती है। तो ये जो टैरिफ है ये चेंज होता रहता है। तो इंशाल्लाह इसको वाइंड अप हम कर लें पावर फैक्टर को, तो आई विल ट्राई कि एक टैरिफ का छोटा सा लेक्चर भी मैं डिलीवर कर दूँ। तो जो टैरिफ है फॉर एग्जांपल 100 पर केवीए प्लस 20 पैसा पर ईच किलोवाट आवर। तो पावर फैक्टर आपने इम्प्रूव करना है बाय 0.9 लैगिंग by means of loss free factors which is costing ₹60 per kVAR। जो आप कैपेसिटर लगा रहे हैं ₹60 आपका एक्सपेंसेस आ रहे हैं पर kVAR। Now you have to calculate that what should be the annual saving affected. For example, you have to allow 10% per annum interest and depreciation on the capacitor। कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो इंटरेस्ट है और प्लस जो डी वैल्यू हो रहे हैं आपके कैपेसिटर्स या उनकी जो रेटिंग है या जो हालत है वो उस न्यू जैसी नहीं रही बल्कि कम हो रही है, तो उसको हमने 10% में कवर कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पावर फैक्टर is 0.8, then power factor is 0.9. From here you got the values of tan theta 1 and tan theta 2। as you know that कि आपने कैपेसिटर्स की कितने kVAR चाहिए, you can find out with the help of this formula। so you get that it is equal to 212.56 kVAR should be taken by the capacitors। अब एनुअल कॉस्ट बिफोर पावर फैक्टर हम करेक्शन निकाल लें तो यू नो दैट S is equal to P hour cos theta and your P is equal to 800 kilowatt। So you get that maximum kVA demand is 1000। so kVA demand charges आपके पास कितने हैं? They are 100 per kVA। so 100 से मल्टीप्लाई किया तो it is equal to 1 lakh rupees। then there were 20 पैसा per kilowatt। और अब किलोवाट आवर के लिए आपके पास कितने यूनिट्स कंज्यूम आपके कितने हो गए टोटल? 800 मल्टीप्लाई बाय 3000। अब ये 3000 किस दर से आया है? बिकॉज द नंबर ऑफ आवर्स आपके पास कितने हैं? 3000 है। तो आपको पता है कि यूनिट आपके पास आप किस में लेते हैं? हमेशा केवीएच में लेते हैं। किलोवाट आपको पता है 800 है और नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं? 3000 है। तो यू गेट 24 lakh kilowatt hours। it means that your number of units are 24 lakh। as you know that 1 unit is equal to 1 kWh from the very basics of the physics। FSC में पढ़ते रहे। now energy charges per year will be equal to 20 paisa per kilowatt hour। so it will be equal to 20 paisa is equal to 0.2 rupees multiplied by 24 lakh units। so it will be equal to 4,80,000 rupees। now the total annual cost will be equal to the kVA demand charges, that is 1 lakh, plus the energy charges per year, that is 4,80,000, and it is approximately equal to 5,80,000 rupees। now you have to see after the power correction आपकी annual cost में saving कितनी आ रही है। तो simply आप क्या करेंगे? 0.8 को 0.9 से चेंज कर देंगे और केवी डिमांड है, जाहिर सी बात है आपकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। एनर्जी चार्जेस सेम रहेंगे और जो कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपेसिटर्स है आपकी वो भी कम हो जाएगी। और एट द एंड यू विल सी कि टोटल एनुअल कॉस्ट विल बी 5,70,164। so there is some annual saving of ₹9,836 rupees। Similarly, a factory takes a load of 200 kilowatt at 0.85 power factor lagging for 25 hours per annum। Tariff is given, rate per unit is given, power factor is improved, और जो कैपेसिटर की कॉस्ट है पर केवीआर वो भी बता दी गई है और जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन रेट है वो भी बता दिया गया है। ये हमने इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन रेट हमने ऐड किया था। तो सिमिलरली इन वेरी सेम मेथड यू कैन फाइंड आउट वैल्यू। इसमें कोई प्रॉब्लम या एम्बिग्यूटी तो हम डिस्कस कर लेंगे।